start. Therefore, no cause of action arose at Chandigarh for reference of the dispute to the Labour Court at Chandigarh stop. The management had taken specific objections before the Assistant Labour Commissioner UT Chandigarh, even on the maintainability of the conciliation proceedings stop. It was therefore incumbent on the UT administration to decide that it had jurisdiction over the matter before referring the same to the Labour Court under Section 10 of the Act. Learned Counsel has further submitted that Section 10 of the Act imposes a duty on the appropriate government to form an opinion as to whether any industrial dispute exists or is apprehended stop. This decision must be taken by the appropriate government stop. The industrial dispute must arise within the territorial jurisdiction of the appropriate government stop. The industrial dispute which exists or is apprehended must be within the territorial jurisdiction of the appropriate government stop. In the present case, all three ingredients are missing stop. It is further submitted that Section 4 of the Act highlights the jurisdiction of a conciliation officer stop. It is limited to a specific area or for specified industries in a specified area stop. Therefore, the Assistant Labour Commissioner UT Chandigarh did not have the jurisdiction over the petitioner management stop. The conciliation proceedings are therefore void ab initio stop. Learned Counsel further submitted that Section 20 of the Code of Civil Procedure gives further guidelines about territorial jurisdiction stop. According to the Learned Counsel, the civil suit can be instituted at a place where the defendant actually or voluntarily resides or carries on business or in which cause of action wholly or partly arose stop. Even accepting this principle, the jurisdiction can only be either at Mumbai or at Bangalore stop. For these reasons, it is submitted that the objection to the competence of Chandigarh administration to refer the matter to the Chandigarh Labour Court goes to the root of the controversy and cannot be decided by the Labour Court in its adjudication stop. The jurisdiction of the Labour Court is limited to the reference made to it and to the point incidental there to stop. The objection touching the very basis of the jurisdiction of the Labour Court can only be decided by this court under Article 226 to 27 of the Constitution of India stop. In support of the aforesaid propositions, Learned Counsel has relied on a large number of judgments which shall be adverted to a little later stop. On the other hand, Mr. Rana, appearing for the workman, submitted that Industrial Disputes Act is silent on the territorial jurisdiction of the Labour Court stop. Therefore, the jurisdiction of the Labour Court would be decided on the principles which apply to the proceedings by way of suits instituted under the Code of Civil Procedure stop. According to the Learned Counsel, the courts have always attached a great deal of importance to the residence of the
claimant as the determining factor of territorial jurisdiction. Stop. In the present case, the cause of action accrued to the workman when she was served the order of dismissal at Chandigarh. Stop. हाय स्टूडेंट, डिक्टेशन लिखने के बाद उसको टाइप करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताते हैं। जैसे आप इसमें डिक्टेशन लिख लेते हैं तो इस विंडो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस टाइप से विंडो नजर आएगी। इसमें विंडो के राइट साइड पे स्किप टू ट्रांसक्राइब वाली ऑप्शंस आपको नजर आ रही है, इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको लॉगिन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें लॉगिन नहीं करना है, साइन अप करना है। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट आ जाएगा। क्रिएट अकाउंट में आपने फुल नेम, ईमेल, ईमेल आप अपनी सही ईमेल डालिए, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। उसके बाद आपकी ईमेल पर वेरीफाई योर ईमेल उसका लिंक ओपन हो जाएगा। इस पे आप जाके क्लिक करें। क्लिक करते ही तो कंटिन्यू की ऑप्शन आ जाएगी। कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लॉगिन वाली ऑप्शंस आती है, इस पे साइन इन करना है आपको। साइन इन करने के बाद ट्रांसक्राइब हियर वाला विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे टाइमर है, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टाइम से पहले टाइप कर लेते हैं तो नीचे ऑप्शन है सबमिट अटेम्प्ट, उस पर क्लिक करो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको सबसे पहले एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेसी से आपने टाइप किया। नेक्स्ट विंडो है फुल मिस्टेक, कितनी मिस्टेक आपने की, हाफ मिस्टेक्स कितनी है, और एरर टोटल कितने हैं और कितने वर्ड आपने टाइप किए। और नीचे आपको ग्रीन में दिखा रहा है, ग्रीन ये जो करेक्ट वर्ड है, रेड वाला जो है आपकी मिस्टेक है। इसके बाद नीचे एरर ब्रेकडाउन वाली ऑप्शंस आती है, इसमें आपको सारा डिक्टेशन के बारे में बता रहा है। ओमिट वर्ड्स, मिसिंग वर्ड्स, एडिट वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड, ये सब दिखाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है व्यू लीडर बोर्ड की। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको डिक्टेशंस योर परफॉर्मेंस की ऑप्शन दिखाता है, आपका कितना रैंक है और एक्यूरेसी कितनी है। ये जितने भी बच्चों ने इसको टाइप किया वो उनमें आपका रैंक डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हमारे पास व्यू ट्रांसक्रिप्ट पीडीएफ की ऑप्शंस है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको विद शॉर्ट एंड मैटर जो डिक्टेशन का मैटर है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी आपने डिक्टेशन है इसमें अटेम्प्ट की हैं उसका विद ग्राफ आपको डिस्प्ले करेगा। थैंक यू।